Hello students, welcome back. So now today in this session we will start with the another one, that is chromosomal disorder. In the previous lectures already we have covered about the Mendelian disorder, and both the Mendelian disorder and the chromosomal disorder comes under the genetical disorder. Okay, so whenever we are talking about these disorders we are talking about the mutation, कि किसी म्यूटेशन की वजह से या तो जीन लेवल में कुछ चेंज हो जाए या फिर क्रोमोसोम लेवल पे कुछ चेंज हो जाए. So already we have done all about the changes which takes place on the gene level. Now today we will discuss that what are the changes takes place at the chromosomal level. ठीक है, हमने बताया था कि हमारे पास ये हो सकता है कि क्या क्रोमोसोम में चेंज हो जाए या फिर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है और डीएनए में जो जीन्स है उसमें चेंज हो जाए. सो नाउ व्हाट आर द चेंजेस? अगेन if you will recall the classification in which we have done about the chromosomal disorder or the chromosomal mutation, it can be of two types. It can be structural or it can be numerical. Structure में क्या हो जाए कि क्रोमोसोम का कोई स्ट्रक्चर टूट जाए या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए. ओके, तो वो क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चरल वेरिएशन. अब क्या हो जाए क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंज होते हैं तो इट मीन्स दैट इट वुड बी न्यूमेरिकल वेरिएशन. ओके, सो टुडे हियर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल वेरिएशन कि क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या चेंज हो रहा है. राइट, सो वी हैव क्लासिफाइड द क्रोमोसोमल म्यूटेशन into two parts, structural and numerical. In numerical, again we have classified into aneuploidy and euploidy. Okay, so aneuploidy we are having monosomy, nullisomy, trisomy like this, and euploidy we are having polyploidy. Again polyploidy is classified into alloploidy and polyploidy. So we will not discuss more about it. Okay, so we will discuss only about the aneuploidy because most of the disorders which we have to study, it is due to the aneuploidy. Right, aneuploidy में क्या होता है? Aneuploidy is a gain or loss of chromosome. Okay, इसमें क्या होगा या तो क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम कम हो जाएगा. In general, if we talk about the chromosome number of human beings, 46 chromosome. हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46. And how many pairs? 23 pairs. Okay, अगर इस 46 में क्या हो जाए या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए. So what it will form? 47 और 45 ऐसा कुछ हो जाए. Okay, so there will be changes in the pairs also. So now here we are talking about the aneuploidy, about the gain or loss of a chromosome due to the changes or the mutation takes place on the chromosome. Right here. So here I have crossed two parents, female and male. हमेशा की तरह हमने फीमेल कैसे होते हैं XX and male having the XY. So see students, what happens as there will be some changes और म्यूटेशन क्यों सकती है? देयर आर डिफरेंट रीजंस. इन्वायरमेंटल रीजंस आर देयर मे बी फिजिकल चेंजेस और देयर मे बी सम इफेक्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो ड्यू टू दिस इफेक्ट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम चेंजेस इन द गैमेट फॉर्मेशन आल्सो. ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे गैमेट फॉर्मेशन में भी चेंजेस होंगे. सो इन केस ऑफ फीमेल, नॉर्मली फीमेल कैसे गैमेट्स बनाते हैं? एक्स टाइप ऑफ गैमेट. Okay, and male is forming two types of gamete, that is X and Y. That's all. So here due to the mutation, अगर कोई mutation हो जाती है or due to any disjunction, what will happen that the gametes will not form like this. ऐसे gamete नहीं बनेंगे क्योंकि X हमारे पास बनते हैं. Instead of that, how many types of gametes it will form और what type of gamete it will form, कि सारे ही सारे X gamete इनको क्या होना था? अलग अलग जाना था. They have to segregate. In cell division what happens? The chromatids gets divided during the cell division. यही तो होता है. गैमेट फॉर्मेशन में क्या होती हैं? क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं. बट हियर द क्रोमेटिड्स विल नॉट डिवाइड नॉर्मली जो क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं वैसे डिवाइड ना होकर क्या होंगे कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएं? एक ही जगह पे आ जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. ओके, जनरली व्हाट हैपेंस दैट अलग अलग एक्स क्रोमोसोम होते हैं,
एक में आपको फॉर एग्जाम्पल 2 गैमेट्स इट हैव टू फॉर्म, तो कैसे हो जाते हैं x और x, लेकिन ऐसा ना होकर दोनों ही कहाँ पे आ जाएं, एक ही जगह आ जाएं. Okay, so what they will form XX, and here there will be no one. Okay, no chromosome will be there, so what it will form 0. ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो 0. And in case of male, same thing it is happening, that is X and Y. So we are following the same. Now when you are going for the cross combination, अगर आप इसकी cross combination बनाएंगे तो what you will find, ये XX कितना है 2, it will combine with this 1x of male, so what it will form triple x. Okay, and XX क्या शो करता है, फीमेल. अगर ट्रिपल एक्स है तो क्या होंगे, सुपर फीमेल. So we will not discuss about this type of disorder. Okay, again if you will cross this XX with this another one y, what it will form XXY. Okay, again this 0, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 0, so it will combine with this x, what it will form x0, and this will form y0. Okay, that much, no confusion. So here we will form these combination and we will observe that what it is happening. We will not talk about this part, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. Okay, we will not discuss about this yo. So in your NCERT, some disorders are given which is based on this XXY and XO. ठीक है, XXY आपको क्या दिख रहा है कि ना ये मेल ना ये प्रॉपर फीमेल. इट इज हैपनिंग सो बिकॉज अगर ये XX होता तो ये फीमेल होता, अगर ये XY होता तो ये मेल होता. सो बट इट इज हैविंग 2X and 1Y. सो व्हाट इट इज मेल. ओके, इट इज मेल, बट दैट मेल इज एबनॉर्मल. ये कैसा मेल होगा, एबनॉर्मल मेल. इट मीन्स दैट इट विल नॉट possess एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेल. मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, इवन ओनली सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर present here. Okay, and this type of disorder it is known as line filter syndrome. Line filter syndrome क्या है, these are the abnormal males and when they are forming, when there will be addition of one chromosome. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये XY होता तो क्या होता है, ये मेल होता है, लेकिन ये एडिशनल X क्रोमोसोम के ऐड होने की वजह से क्या हो जा रहा है, देयर विल बी एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम एंड एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम इट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. अब यहाँ पर क्या होंगे, नॉर्मली वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, 47. सो दिस लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स हैविंग हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर, 47 क्रोमोसोम नंबर. लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स कितने क्रोमोसोम होंगे, 47 क्रोमोसोम ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम हियर. ओके, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. We are saying this is the abnormal male. So if it is an abnormal male, so they are having some feminine development. इसमें कुछ क्या हो जाएंगे, feminine development, कि female जैसे parts develop हो जाएंगे, but it is male. Okay, and that's why we are saying gynecomastia. Why? Because gyno related to female structure and there will be some structure. For example, we can say development of mammary glands. Okay, it will take place in the line filter syndromes. And again very important, these are the sterile. ऐसे जो भी 47 नंबर क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, sterile होंगे. They are not able to they will not able to give birth. Okay, ऐसे birth नहीं हो पाएंगे. So we can say that line filter syndromes, addition of one chromosome, and these are the abnormal male. Now another example we have the combination which we are getting here, XO. हमें अगला कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, XO. अगर हम XO की बात करें, व्हाट इट इज फीमेल. अगर ये XX होता तो क्या बन जाता, फीमेल, लेकिन क्या हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, X0. इसको हम क्या कह रहे हैं, X0, सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रेजेंट है. सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर विल बी डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम एंड ड्यू टू दैट इट विल फॉर्म फीमेल एबनॉर्मल, or we can say abnormal female, and that type of syndrome it is known as Turner syndrome. टर्नर सिंड्रोम क्या है, जिसमें एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए एंड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम इट विल रिमेन 45.
हमारे पास कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से कितने रह जाएंगे 45. एंड हाउ दे आर द एबनॉर्मल फीमेल. अब एबनॉर्मल फीमेल होंगी, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे विल नॉट फॉलो द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, so what will happen again, they are also sterile, they will not able to give birth to their babies, and the ovaries which are present, because these are the females, but these ovaries are rudimentary, it means that they are not the functional one. Okay, कोई भी सिर्फ rudimentary part present होंगे, and they lack the secondary sexual characters, and all the characters secondary sexual characters are absent in case of this Turner syndrome. And one more important thing, amenorrhea. What is this thing? We have done in the previous chapter, where there is absence of menstruation, as it is of abnormal female, so it will not able to undergo the menstruation. So absence of menstruation, it is known as amenorrhea. Okay, so these are the characteristics of Klinefelter syndrome and the Turner syndrome. Apart from these two syndromes, there is one more syndrome, that is Down syndrome. Okay, but this Down syndrome is not connected with the addition of this one chromosome or deletion of one chromosome. Okay, so here what is happening, whole of the 21 pair, it is affecting the क्रोमोसोम. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एडिशनल कॉपी हो जाएगी किसकी 21 क्रोमोसोम की. वी आर टॉकिंग अबाउट दोज 23 पेयर. हमारे पास कितने पेयर है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. एंड ऑन द 21 पेयर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी हियर, दिस इज द फर्स्ट, देन सेकेंड, देन लाइक दिस 21, 23. ओके, इसके बीच में बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे. आई हैव नॉट ड्रॉन हियर. सो फ्रॉम स्टार्टिंग इफ विल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट विल बी 23rd, 22, 21 एंड 20, so on. Okay, so if you will see here the chromosome number 21 में क्या होगा, normally there are 2 pairs. Okay, ये होते हैं homologous chromosomes है, but instead of that there will be addition of one more 21. ठीक है, एक 21 और ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, वी आर हैविंग 3. ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ट्राइसोमी ऑफ 21. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है 21 में 2 की जगह कितने हो गए अब 3 पेयर्स. राइट, सो हियर वी हैव सेड दैट वन मोर पेयर इज एडेड हियर इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम. सो दिस इज अ डिफरेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो वन क्रोमोसोम कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, बट यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर ही ऐड हो गया है. Right, and important thing that it is observed by the Langton Down, and in 1866, that's why given the name Down syndrome. And what are the characteristics of these Down syndromes, that the person, those are affected with this syndrome, they're having short stature, height is short, and head is round, and furrowed tongue means the tongue is not straight, somehow furrowed, and partially open mouth, and wholesome we can say. These are having the low psychomotor effect, and they are mentally retarded. Okay, but they may be fertile. We cannot say they are the sterile as compared to this Klinefelter syndrome as well as Turner syndrome, but it happens very rare. Right, so these are the 3 disorders which caused by the chromosomal disorder. क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंज होने की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है, these are the chromosomal disorder. So today we have completed all the topics of this chapter. Do revision of all these chapters, right? So that's all for today. Thank you.